हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वजीत फ्रॉम टेक्नोविलेज यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में कैसे फायर इफेक्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल, देन सिलेक्ट न्यू, देन सेट द पेपर विड्थ एंड हाइट, देन क्लिक ऑन ओके, देन बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे ब्लैक ऑल्सो, देन सिलेक्ट टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है टी, then type a text, then select move tool का शॉर्टकट है V, then drag it to the center, then right click on the text layer, then select duplicate layer, then click on OK, then select the original text layer, then click on filter, then select stylize, then select wind, then OK, then set the direction from right, then click on OK, then press Ctrl plus F from keyboard, again press Ctrl plus F from keyboard, then again go to filter, then stylize, then click on wind, then select direction from the left, then click on OK, then again press Ctrl plus F, again press Ctrl plus F, then select Ctrl plus T from keyboard, then right click, then select rotate 90 degree CW, then enter, again click on filter, then stylize, then wind, select from left, OK, then press Ctrl plus F and again press Ctrl plus F, then click on filter, then stylize, then select wind, then select the direction from the right, then click on OK, then press Ctrl plus F, again press Ctrl plus F, again click on again press Ctrl plus T from keyboard, then right click on it, then select rotate 90 degree CCW, then adjust the layer, enter, then right click on the text layer, select blending option, then select color overlay, then click on OK. So this is all about Photoshop में कैसे फायर इफेक्ट ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe and comment.